PVPS न्यूज डेस्क पर मैं हूं आन्या और आज हम आपको अप्रैल से जुलाई 2025 तक की प्रमुख गतिविधियां दिखाएंगे। We began the session by honoring our previous year's toppers. A grand graduation and felicitation ceremony was held to recognize the academic achievers from each grade. Congratulations to all the proud parents and bright students. हमने इस सत्र की शुरुआत पिछले साल के टॉपर्स को सम्मानित करके की। एक भव्य स्नातक और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हर कक्षा के अनाथ छात्रों को सराहा गया। सभी विद्यार्थियों और उनके माता पिता को बधाई। On April 5th, the school celebrated Ram Navami with bhajans, skits and stories from the Ramayana. Students dressed as characters and spread the message of truth and righteousness. 5 अप्रैल रामनवमी के अवसर पर भजन, नाटक और रामायण की कहानियां आयोजन हुई। छात्रों ने पात्र के वेशभूषा लेकर धर्म और सत्य के संदेश दिया। Was observed on April 7th, where health awareness workshop and fitness activities were conducted for all age groups. 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य की जागरूकता और फिटनेस की विद्या आयोजित की गई। Teacher orientation program was held on April 12th to equip educators with innovative teaching methods and classroom strategies. 12 अप्रैल को शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा वर्ग सिखाई गई। April 18th was World Heritage Day. World Heritage Day, also known as the International Day for Monuments and Sites, is celebrated every year on April 18th. This special day was established by the International Council on Monuments and Sites, ICOMOS, in 1982 and approved by UNESCO in 1983. The students prepared presentations and models highlighting India's rich cultural monuments and global heritage sites. 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। छात्रों ने प्रस्तुतियां और मॉडल तैयार किए। School celebrated Earth Day on April 22nd. For 55 years, Earth Day has led the world in educating and mobilizing the public to take action to address critically important environmental issues. We are global advocates for the health of the planet, calling for the protection of our air, oceans, soil, ecosystems, wildlife and human health. April 22nd, 2025 will mark the 55th anniversary of Earth Day. हमारे विद्यालय ने 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस बनाया। Our school celebrated Earth Day on April 22nd. For 55 years, Earth Day has led the world in educating and mobilizing the public to take action to address critically important environmental issues. We are global advocates for the health of the planet, calling for the protection of our air, oceans, soil, ecosystems, wildlife and human health. April 22nd, 2025 will mark the 55th anniversary of Earth Day. हमारे विद्यालय ने 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस बनाया। We celebrated Labor Day on 1st May, a day that honors the hard work, dedication and contribution of workers all around the world. It is a reminder that every job, no matter how big or small, has value and deserves respect. On this special day, let us take a moment to express our heartfelt gratitude to the hardworking people in our school. हमने 1 मई को मजदूर दिवस बनाया। यह हमें यह याद दिलाता है कि कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, महत्वपूर्ण होता है। On the 8th, our school hosted a cervical cancer awareness camp in collaboration with the Rotary Club. Cervical cancer remains a significant health challenge, particularly among young girls. To address this issue, the vaccination camp was organized at our school, जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल। 8 मई को हमारे विद्यालय जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल में रोटरी क्लब के सहयोग से सर्वाइकल कैंसर शिविर का आयोजन किया गया। सर्वाइकल कैंसर विशेष रूप से युवा महिलाओं के बीच एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। इस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यालय में टीकाकरण शिविर भी आयोजित किया गया। All students said a firm no to plastic on May 9th and promoted a greener tomorrow by conducting awareness rallies in the local community. Students also participated in paper bag making to support eco-friendly living. 9 मई को छात्रों ने प्लास्टिक को ना और हरियाली को हाँ अभियान चलाया। On May 12, Mother's Day was celebrated to share that a special assembly was held to celebrate Mother's Day. The event was a heartfelt tribute dedicated to honoring the unconditional love, care and support of all mothers. Our students expressed their gratitude through songs, speech and performance, making the occasion truly special. On May 12, Mother's Day was celebrated to share that a special assembly was held to celebrate Mother's Day.
The event was a heartfelt tribute dedicated to honoring the unconditional love, care and support of all others. Our students expressed their gratitude through songs, speech and performance, making the occasion truly special. The school organized a fun-filled summer camp. The camp including a variety of fun, educational and engaging activities designed to enrich your child's summer experience. विद्यालय ने एक मनोरंजक समर कैंप का आयोजन किया। इस समर कैंप में विभिन्न प्रकार की मजेदार, शैक्षिक और आकर्षण गतिविधियां शामिल थी। The school organized a fun-filled summer camp. Yoga Day on June 21st brought harmony and mindfulness. Students participated breathing techniques and learned how to maintain inner peace. हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल में एक वर्चुअल योग सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। जूम के माध्यम से यह सत्र हमारे छात्रों के बीच सचेतना, लचीलेपन और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। On July 5th, we pledged for a cleaner environment. Students received green badge to remind them of their commitment to sustainability. 5 जुलाई को हमने स्वच्छता और हरियाली की शपथ ली। छात्रों को ग्रीन बैज पहनाए, जो उनके संकल्प का प्रतीक है। On July 5th, we pledged for a cleaner environment. Students received green badge to remind them of their commitment to sustainability. 5 जुलाई को हमने स्वच्छता और हरियाली की शपथ ली। छात्रों को ग्रीन बैज पहनाए, जो उनके संकल्प का प्रतीक है। On July 5th, we pledged for a cleaner environment. Students received green badge to remind them of their commitment to sustainability. 5 जुलाई को proud moment arrived on July 10th with the investiture ceremony. Our new student leaders were officially handed their duties and badges. 10 जुलाई को investiture ceremony में नवनिर्वाचित छात्रों को उनके दायित्व और कर्तव्य सौंपे गए। Celebrated World Youth Skills Day by learning coding, communication and creativity based skills. 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, जिसमें छात्रों ने कोडिंग, संवाद और रचनात्मकता से जुड़ी क्षमताएं सीखी। July 15th, school declared itself a plastic-free campus. On July 17th, students took responsibility to monitor plastic usage and spread the message. Plastic pollution is one of the biggest threats of our environment. This summer break, we encourage our students to become eco-warriors by adopting simple yet impactful actions to reduce plastic use. हमारे विद्यालय ने 17 जुलाई को स्वयं को प्लास्टिक रहित परिसर घोषित किया। हम अपने छात्रों को सरल लेकिन प्रभावशाली कदम उठाकर प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए पर्यावरण योद्धा बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।